call out this brand, but really this is very disappointing. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. How are you doing today? I am really excited for today's video. I have ordered some products from Myntra end of season sale. So some products are very interesting and some products are really disappointing. So yeah, without any further ado, let's get started. So very first product is this Urbanic Straight Fit Denim. This is a non-stretchable. They have mentioned that this is stretchable, but this is not stretchable at all. You can see this is a very good material and it's not thick denim. You can see in this video how it looks like. Generally Urbanic denims are very long in nature. Most of the denims, my height is 5'3". You can see in this video that how it looks on me. I can fold it somehow or I can get it stitched, but overall ऐसा look आएगा. I have ordered size 26. MRP of this product is 1790 and मुझे डिस्काउंट में मिली है 966. That is almost 40 या 50% डिस्काउंट में मिली है और इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है. नो डाउट you want to try this, you definitely try this. You can add to your wish list and order in future when whenever there is a sales going on Myntra. So yeah, I really love this denim. So this is my first denim from Urbanic and I would highly recommend कि हाँ आप ले सकते हो. Of course अलग अलग पैटर्न में और साइजेस में फ़र्क हो सकता है, but definitely quality is the best. Just for your information guys, Myntra Fashion Carnival is going on from 14th to 28th. So first product hit थी तो second तो हमको मिस लेनी ही होगी. So second product I have ordered from this brand called Street 9, जो I think homegrown brand है, no doubt, but this is the product from this brand. और यहाँ पे ऐसा पैटर्न बनाया हुआ है. This is really high waist pant और यहाँ पे साइड में कट्स दी है. सो यू विल नॉट फील अनकम्फर्टेबल इन दिस कट्स बिकॉज ये बहुत हाई वेस्ट में आते हैं. You can see in this video that the look wise it is nice, but material wise it is not at all good. You can see this is a completely cotton material. If you really want to try denim in really cotton, like cotton मतलब हमारे जो कुर्ता होता है और something like that, कुर्ता में आपको वो वाला कॉटन अच्छा लगेगा, but really in pant I don't feel like ये बहुत worth. So talking about the price of this product is, the MRP of this product is 2299 and I got this pant for 629. आप देख सकते हो, like मतलब सिर्फ दिखाने के लिए इतना MRP रख दो कि भाई प्रोडक्ट मतलब बहुत अच्छा है बिकॉज कि हाई प्राइस का है, बट आई डोंट फील लाइक कि इतना इसका MRP भी वर्थ है. बट एनी विच वेज दिस इज अ होम ग्रोन ब्रांड. आई डोंट वॉन्ट टू कॉल आउट दिस ब्रांड, बट रियली दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. इसमें मेरा रेफरेंस के लिए बता देती हूँ कि इसमें मैंने लिया है साइज 26. So yeah, next product is denim again because I don't know why I have ordered most of the bottoms from this sale. I think मैंने very last में order किया था तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में size ही नहीं मिला था. So मुझे ऐसा लग रहा है कि ये rather than Myntra haul ये bottom wear haul होने वाला है. So any which way, product is this Sassafras Fuchsia Pink denim. You can see this is a mid-rise. Yes, this is a mid-rise pants, jeans and नीचे से आपको ऐसा मिलेगा, like इसमें कुछ भी fold और something ऐसा कुछ भी नहीं है. And this is a normal denim, but it is in a pink color. But you can style in many ways, and if you want to play with the colors you can definitely go for this pants. I have ordered 28 size in it and the MRP of this product is 2099 and I got this product in 829, so it was in a
60% sale. So yeah, definitely if you want to play with the colors and if you really like the pink color, if you are a pinky person, you can definitely order this. I would recommend this. But if you want to spend some more money and you can buy H&M one, so I would recommend the H&M one because uska material and comfort is very nice than this. So yeah, next product is again denim, which I have ordered from H&M. So next product is again denim. So I have ordered this H&M white 90s baggy jeans and you can see, आपको ये कैमरा पे अच्छे से दिख रहा होगा, आई डोंट नो, क्योंकि वाइट है तो बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है, बट आप वीडियो में देख सकते हो कि हाउ इट फिट्स मी एंड दिस इज़ अगेन अ स्ट्रेट फिट डेनिम. ये इसकी भी लेंथ ज़्यादा है बट ऑफ कोर्स यू कैन फोल्ड इट और यू कैन गेट इट कस्टमाइज एज पर योर लेंथ. I have ordered the Euro 36 because इसमें यूरो में ही साइजेस होती है. सो मेरे पास दूसरी थी, उसके रेफरेंस से मैंने वो मंगवाई, बट आई डोंट नो कि वो मुझे लूज़ हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो रही थी. सो आई हैव ऑर्डर्ड, मतलब गेट इट रिप्लेस्ड एंड आई हैव ऑर्डर्ड Euro 34. Sorry for the background noise because it's raining, so sorry for that. हाँ, मैं कह रही थी कि बट है ना, मिंत्रा पे H&M की साइज़ में कुछ इशू है बिकॉज वहाँ पे साइज़ 25, 27 ऐसा लिखा है. सो मैंने मेरे हिसाब से मैं हाई वेस्ट में 26 करती हूँ, वहाँ पे 26 नहीं था तो आई थॉट कि चलो 27 कर लेती हूँ, मे बी कुछ यहाँ वहाँ इशू होगा तो. सो बट वो मुझे बहुत ज़्यादा बिग हो रहा था, लाइक लूज़ हो रहा था. सो आई हैव ऑर्डर्ड साइज़ 25 ऑन मिंत्रा. इफ़ आपको रेफरेंस चाहिए तो साइज़ 25 एंड मैं हाई वेस्ट में 26 पहनती हूँ. सो या ये मुझे कुछ अजीब ही लगा कि ये वहाँ पे साइज़ का चेंज था और यहाँ पे साइज़ का चेंज था. द डेनिम ऑफ दिस H&M इज़ वेरी गुड. दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट एंड the material of this denim is really comfortable. Yeah, you can definitely go for this. So talking about the price of this product is, MRP of this product is 1999 and I got it for 1239 something. So yeah, 40% something में था, 40% या 30% ही डिस्काउंट था, but I really wanted white denim, good white denim, so that's why I go for H&M one because quality अच्छी होती है, that's why. So yeah, highly recommend if you want to go for H&M denim. Next I have ordered simple t-shirt जो अभी मुझे comfy कपड़ों से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है. That's why I have ordered this No Rule Just Right. This is a very comfy t-shirt, very good material. You can see this material is very breathable and really good cotton material. This is from brand called Roadster Life. The MRP of this product is 899 but I got it in 224 rupees. It was like in 80% I think, मुझे याद नहीं है, बट हाँ इतने में मुझे याद है कि इतने प्राइस में आया था. एंड यू कैन सी इट्स वेरी कम्फी एंड नाइस. So for your reference, I have ordered in size S. एक्चुअली तो मुझे XS भी आ जाता बट मुझे लूज फिट चाहिए था, इसलिए मैंने S साइज ऑर्डर किया है. सो इफ आपको भी कुछ कंफर्टेबल और लूज फिट अच्छे मटेरियल्स के टी शर्ट चाहिए तो आप रोडस्टर ट्राई कर सकते हो. रोडस्टर में बहुत अच्छे ऑप्शंस है, you can definitely give it a try. So next product again from this brand called Street 9. This is a homegrown brand. I don't want to call out again, I am saying, but please improve the quality of product because it is not worth at all. You can see this is looking so nice. The color is very beautiful, the cloth is very beautiful material wise, but the finishing of this pattern, or I would say this embroidery, is not at all good. You can see there is some stones are missing, some stones are not at all in place. तो भी आपको इफ लेना है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो. दिखने में बहुत अच्छा है, सिर्फ और सिर्फ आपको दूर से फ़ोटो लेनी है या फिर
आपको इतना फ़र्क नहीं गिरता है कि नहीं कैसा है क्वालिटी और समथिंग लाइक, you can definitely go for this because pattern wise or color wise it is very beautiful, but the finishing wise I would not recommend. The MRP of this product is 2599 and मुझे ये डिस्काउंट में मिला था 961 रुपीज़, but I don't feel like that 961 is also worth of this quality. Size I have ordered is XS. Yeah, I have ordered XS size, so आप देख सकते हो fit and all, but you can go for it if you like it. Yeah, that's why I am saying कि मुझे पैंट में भी disappointment हुआ और इसमें भी disappointment हुआ क्योंकि फिनिशिंग अच्छी नहीं है. If you are charging something or we are paying something, so we are expecting some quality from particular brand. So yeah, that's it for today's video. Hope you like it. If you like it, please share with your friends and family so that they will not fall in that trap of these advertisements. And yeah, hope you like it. Then please give it a thumbs up, subscribe to my channel and hit that bell icon so that you will get notification whenever I will post new video on my channel. I will see you in my next one. Till then, bye guys, stay positive and stay happy. Lots of love and kisses.